we are going to see about the your pharmaceutical engineering. So pharmaceutical engineering is a basic subject, and if you know about the pharmaceutical engineering, physical pharmacy and dispensing pharmacy, you can understand industrial pharmacy and biopharmaceutics very well. So out of that pharmaceutical engineering, you can expect at least 4 questions. Every year in the GPAT exam, you can expect 4 questions, or they used to ask 4 questions from pharmaceutical engineering. यहाँ पे आपको near about 14 chapters है, and वो 14 chapters में से 4 question आने वाले हैं. So but we are going to see all the chapters. एक क्वेश्चन भी आ सकता है तो फिर भी वो चैप्टर में पूरा लेने वाले. From the pharmaceutical engineering, today we will try to finish this size reduction chapter. Size reduction. So first of all, what do you mean by size reduction, and why you want to do size reduction of your material or your raw material? So what is size reduction? Size reduction is nothing but the decrease in the dimensions of your original material. Suppose your original material is this. Suppose your original material is large in size. What is meant by size reduction? Decrease in the size of that original material. Okay, decrease in the size of that original material or decrease in the dimension of that original material, known as a size reduction, right? Why you have to do size reduction? For the formulation, you want a particle size in a particular range. For a formulation, you want a particle size in a uniform range. अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है, उसका साइज बहुत ही बड़ा है, बड़े बड़े लम्स है उसकी, बड़े बड़े लम्स है उसकी, तो वो मटेरियल क्या है, आपको एज इट इज आप यूज नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज large sized lumps of material for tableting or for capsule, etc. So you cannot enclose this large size particle in the capsule, obviously. So you have to do size reduction. You have to break this particle into smaller size. आपको इसको break करना पड़ेगा smaller particles में. This is achieved by size reduction. ये कि कैसे करते हैं आप size reduction? Grinding of this large sized particle will result in the smaller particles, right? Now these smaller particles, they are also of non-uniform size. Later on, you have to classify them, you have to separate them, you have to segregate them. So that is known as size separation. So size reduction means breaking of large sized material into smaller dimension particles, known as size reduction. Okay, big sized particle will be broken down into small sized particle. Now why you want small sized particle? Because see, large particle will have, okay, large particle will have a lot of problems. Large particle will offer very less surface area for the absorption. Large particles, you cannot get uniformity of dosage. So for different reasons, for example, for formulation of uniform dosage form, for the effective dissolution, you want a small particle size. तो आपको मालूम है particle size कम होगा तो उसका surface area जो है for the absorption it will be increased. Then particle size कम होगा तो material का डिसोल्यूशन जल्दी होगा, तो डिसोल्यूशन होगा तो एब्सॉर्प्शन जल्दी होगा, तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगा. दैट्स व्हाई यू नीड टू डू साइज रिडक्शन. यू कैन नॉट फॉर्मुलेट योर प्रोडक्ट एज सच. आपके पास जो ओरिजिनल मटेरियल है, पैरासिटामोल का पाउडर ला लिया आपने, उसमें एक बड़े बड़े पत्थर जैसे ये है उसमें, तो वो एज इट इज यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू डू साइज रिडक्शन. यू हैव टू डिक्रीज द पार्टिकल साइज टू फॉर्मुलेट द फॉर्मुलेशन इफेक्टिवली. ओके, नाउ साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज कम्युनिशन, डिमोनेशन और पोलराइजेशन. ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है. साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज कम्युनिशन, डिमोनेशन एंड पोलराइजेशन. So all these are nothing but the synonyms for size reduction. Comminution, diminution and polarization. Comminution मतलब क्या? Size reduction. Diminution मतलब क्या? Size reduction. Polarization मतलब क्या? Size reduction. So all these are the synonyms for size reduction. Size reduction itself means decrease in the dimension of that original powder, original particle, original raw material. तो आपके पास में कोई मिट्टी का बड़ा मिट्टी का पत्थर है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक कर दिया है, कहाँ पे दीवार पे मार दिया है, फिर कोई पत्थर उसके ऊपर मार दिया, तो क्या होगा, वो लम्स, वो जो पत्थर है मिट्टी का पत्थर ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल्स छोटे छोटे मिल जाए. दैट इज नथिंग बट द साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन मींस डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल, राइट? व्हाई यू हैव टू डू this size reduction? There are different reasons for size reduction. So first of all, size reduction is also known as comminution, diminution and polarization. You have to remember these synonyms. They can ask in synonyms के ऊपर question आ जाता है. So you have to remember size reduction is known as a comminution, diminution and polarization, right? Whatever material you have, you might have material which is very soft, you might have material which is very hard. Material different type का होता है. Material can be a soft, material can be intermediate, or material can be a
very hard. So material can be soft, material can be with intermediate hardness, or material can be very hard. So there is a one scale known as a Mohs scale. There is a one scale known as a Mohs scale. यहाँ पे एक scale होता है Mohs scale. So in relation with the hardness of surface, in relation with the hardness of surface, there is a one arbitrary scale on which various materials they have given a grades, they have given a numbers on a Mohs scale, and material are classified और मटेरियल हैज डिजिग्नेटेड नंबर्स ऑन मो स्केल. मो स्केल जो है एक स्केल है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक, 10 या 1 से लेके 12 तक, तो उसके मटेरियल के हार्डनेस के अकॉर्डिंगली कौन सा मटेरियल हार्ड है भाई, जिसका मो स्केल के ऊपर 1 नंबर है वो तो सॉफ्ट होगा, 2 वाला थोड़ा सा उससे हार्ड, 3 वाला उससे हार्ड, 4 वाला इससे हार्ड, जिसका हार्डनेस नंबर 10 है तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड. सो इन रिलेशन टू द हार्डनेस ऑफ सरफेस ऑफ आर्बिट्ररी स्केल, हार्डनेस ऑफ surface of material, there is one arbitrary scale on which material is classified according to the hardness, that is known as a Mohs scale, and on which material is assigned a number from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक नंबर दिए हैं उनको. एक का जिसका हार्डनेस नंबर 1 है वो मटेरियल कम हार्ड होगा, जिसका हार्डनेस नंबर 10 है दैट मटेरियल विल बी वेरी हार्ड. सो लाइकवाइज दैट. सो Mohs scale क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता है आपको, Mohs scale इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग. आपको ऑप्शन में आएगा पार्टिकल साइज, पार्टिकल डायमेंशन, हार्डनेस, देन फ्लूइडिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछना है तो कैसे पूछेंगे? Mohs scale is related with ऑप्शन ए साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ड्राइंग ऑपरेशन, और भी ऑप्शन है. सो रिमेंबर Mohs scale is related with the size reduction. It denotes the number of material, it denotes the hardness number of material. So on the Mohs scale hardness number is given. Okay, so material will be classified according to the hardness. For example, so hardness number 1 means it is a soft material on the Mohs scale. For example, graphite का जो है hardness number 1 होता है Mohs scale के, उसको बोलते हैं soft material. Hard material they are having hardness number in between 3 to 8. 3 to 8 7 के इसके बीच में जिसका नंबर है उसको बोलेंगे हार्ड मटेरियल. एंड फॉर डायमंड इट इज अ 10. डायमंड का हार्डनेस नंबर होता है 10, so it is a very hard material or very tough material, right? There is one arbitrary scale known as a Mohs scale on which material has given the hardness number ranging from 1 to 10. Okay, 1 for soft material, 10 for hard material. Likewise that. I will show you the Mohs scale in upcoming slide. Now what is the purpose of size reduction? Why you have to do size reduction? Size reduction is done for the content uniformity. So you are designing a dosage form, you are making a dosage form, whether you are making tablet, capsule, suspension, emulsion, suppository, whatever dosage form you are making. So for that you need a active ingredient, API, जो active drug होता है powder वो लगता है. That is in a different, most of the pharmaceutical powders they are a poly size. Pharmaceutical powders क्या है? Poly size. Poly size मतलब क्या है? Most of the pharmaceutical powders they are poly size. Poly मतलब बहुत सारे, size मतलब अलग अलग. So pharmaceutical powders they are having particles in a different sizes. So pharmaceutical powders having particles in a different size. कुछ particle बड़े होंगे, कुछ कम होंगे, उससे कुछ medium होंगे. So they are known as a poly size powder. So if all particles of powder they are of the same size, or if they are in a range of particular size, they are known as a mono size powder. ठीक है, they are known as a mono size powder. तो मोनो साइज पाउडर मतलब क्या है? जो पाउडर का पार्टिकल एक रेंज में होगा या फिर वो पार्टिकल यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इन द साइज. अगर पार्टिकल अलग अलग साइज के पाउडर में उसको बोलेंगे पॉली साइज पाउडर. मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स दे आर पॉली साइज पाउडर, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू do size reduction. That's why you need to do size reduction to get a uniform size of powder. Okay, not only size reduction but also you have to do size separation. Size reduction के बाद में size separation भी करना होता है. So content uniformity, right? So content uniformity. For example, in the tablet, so you are not using only drug, you are using additives. तो वहाँ पे आपका API, आपका ओरिजिनल API का पाउडर है, उसके साथ में टाल्क है, डिसइंटीग्रेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत सारे कलरेंट है, बाकी एडिटिव्स है, डिसइंटीग्रेंट है, स्विचिंग एजेंट है. सो ऑल दीज ingredient they will not have similar particle size. So some have more particle size, some will have less, intermediate. So you have to make them in a uniform size. For why? Because if particle size is uniform, हर एक मटेरियल का पार्टिकल साइज
एक पर्टिकुलर रेंज में होगा, से फॉर 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन के रेंज में होगा, क्या होगा, मिक्सिंग विल बी वेरी इजी, मिक्सिंग विल बी वेरी इजी, यू कैन इजीली मिक्स दैट पाउडर, ओके। बट सपोज अगर वो पार्टिकल्स है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग पार्टिकल साइज है, कुछ का बड़ा है, कुछ का छोटा है, कुछ का मीडियम है, ठीक है, so what will happen, uniform mixing will not be there, so there will be segregation, and if you not having uniform mixing, your content uniformity will be different। दो टैबलेट में अगर एक टैबलेट आपके टैबलेट में बोला है कि लेवल पे ईच टैबलेट कंसिस्ट ऑफ 10 मिलीग्राम ऑफ इफेक्टिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, तो एक टैबलेट में 10 मिलीग्राम इफेक्टिन हाइड्रोक्लोराइड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक टैबलेट में 10 मिलीग्राम होगा, एक टैबलेट में 7 मिलीग्राम होगा, एक टैबलेट में 5 मिलीग्राम होगा, एक टैबलेट में 20 milligram. To ensure the uniformity of content, you need a size reduction. You need a order of uniform size, right? Again, for uniform flow of all particles. Suppose आप tableting operation कर रहे हो, tablet बन रहे हो, so you know that you might have seen the parts of tableting machine, tablet machine. तो वहाँ पे एक hopper होगा ऐसा, जिसमें आप पाउडर डालेंगे, नीचे आएगा अपर पंच, लोअर पंच, बाकी tablet में। So if you have different size of particles in the powder, so what will happen, it will affect the flow of particles from the hopper to the die cavity. So for a uniform flow of powder, you need to do size reduction. Again, another reason for effective extraction of drug, fruit drugs होते हैं, herbal drugs, before the extraction, but for the extraction purpose you collect the fruit drugs, and after collecting that fruit drug you have to decrease the particle size, आप उसको पाउडर कर लेते हो, क्यों, बिकॉज द सॉल्वेंट शुड बी पेनिट्रेट इन दैट पाउडर, ओके, एंड इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द एक्टिव कंटेंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। जैसे आपने कोई लीव्स लिए, तो लीव्स अगर ले लेते जैसे कि वैसे पत्ते आप सॉल्वेंट में नहीं डालते, यू यूज टू पाउडर दैट leaves, and then you subject that leaves or powder of leaves to the extraction. For the effective extraction, you need a size reduction. Effective drying improve the physical stability of drug to improve the dissolution rate. So as you know, decrease in the particle size will increase the dissolution rate. जितना ज़्यादा particle size कम होगा उतना ज़्यादा dissolution rate क्या होगा, बढ़ेगा, and जितना ज़्यादा dissolution rate होगा उतना ज़्यादा bioavailability बढ़ेगा, उतना ज़्यादा bioavailability for effective drying, ठीक है, to improve the physical stability, to improve the dissolution rate, that is in turns to improve the bioavailability, to improve the rate of absorption। अगर bioavailability dissolution अच्छा है तो rate of absorption भी अच्छा ही होगा। So to improve the rate of absorption, for example there are example chloramphenicol and griseopulvin, ये ड्रग जो है क्लोराम्फेनिकोल एंड ग्रिसेओफुल्विन, इनका टेक एग्जांपल ऑफ दिस ग्रिसेओफुल्विन। ग्रिसेओफुल्विन हैज अ बायो अवेलेबिलिटी वेरी लेस, इसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है इसका, ग्रिसेओफुल्विन का इसका बायो अवेलेबिलिटी कम होता है, बिकॉज इट हैज अ वेरी लार्ज पार्टिकल साइज, दिस ग्रिसेओफुल्विन हैज अ वेरी लार्ज पार्टिकल साइज, एंड दैट्स व्हाई डिसोल्यूशन इज लेस एंड बायो अवेलेबिलिटी लेस, absorption is less। Grinding or decrease in the particle size of this griseopulvin or micronization of griseopulvin, micronization of griseopulvin has increased the bioavailability, has increased the absorption and bioavailability, and has decreased the dose of that griseopulvin। griseopulvin का 5% dose decrease हो गया, क्यों, because of the micronization, because of the grinding, because of the decrease in the particle size। So like that is also true for chloramphenicol। So to improve the absorption rate, you need to decrease the particle size, so that is the purpose of size reduction। What is size reduction? Combination or diminution of polarization, that is a decrease in the dimension of original particle or deformation of particle, decrease in the dimension of particle or decrease in the size of original particles or deformation of particles। You can see here a Mohs scale। So Mohs scale means it is a arbitrary scale where different materials are assigned a number depending on their hardness, depending on their hardness। For example, talc is given hardness number 1, so it is very soft material, hard nahi। Then gypsum is given hardness number 2, then calcite is given hardness number 3, fluorite is given 4, then apatite 5, orthoclase, then quartz given 7, then topaz given corundum 9, then diamond 10, okay, then netherite 11। Talc is very soft material, talc is soft, and this netherite is very hard, netherite diamond is very
because they are given hardness number 10 and 11. These are the name. और common object like जैसे होता है अपन nail होता है nail नाखून, so it is having hardness number 2.5. कॉपर पेनी मतलब आपका जो सिक्का होता है कॉपर का सिक्का ना, कॉपर का सिक्का 3.5. नाइफ आपका जो चाकू होता है उठली उसको उसका तो 5.5. स्टील जो होता है स्टील नेल मतलब जो मराठी में उसको क्या बोलते हैं, so it is a 6.5. so जो ड्रिल होता है ड्रिल, so it is a very tough 8.5 हार्डनेस नंबर. सबसे ज्यादा ये टफ होता है. That क्या होता है मुझे नहीं पता. so thousands. so Mohs scale means it is a arbitrary scale on which the material has given the number depending upon the hardness. How there is a deformation of particle, how there is a breaking of particle. The two way that you can decrease the particle size. दो तरीके होते हैं particle size decrease करने के. First one is nothing but the precipitation. First one is nothing but the precipitation. पहला particle size reduction का mechanism क्या है? Precipitation. Whenever you are doing crystallization, at that time precipitation is there. So decrease in the particle size. Okay, that is for compound which is present in the solution. Now second way is nothing but the mechanical breakdown of particles. Second one is a mechanical breakdown of particles. First one क्या है? Precipitation. Second one क्या है? Mechanical breakdown of particles. Now mechanical breakdown of particle. So जैसे एक आपका एक particle है. So unmilled particle means unmilled particle. एक बड़ा सा particle है आपको. So in that large size particle there is a flaws. There is a flaws in the particle. Flaw मतलब क्या है? This is a weak structure of particle. यहाँ पे क्या है? Weak structure है. So this is a weak structure of particle. ये भी है weak structure. So weak structure of particle. So in the particles there are certain weak structures known as a flaws in the particle. Now if there is a impact, if यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ने आपने कुछ मारा या फिर इसको किसी सरफेस के ऊपर मार दिया फेंक के, what will happen? The particle will broken down. When कहाँ से break होगा? These flaws they are a weak portion of your particle. These flaws are weak portion of particles and particle will break broken down on these flaws. So impact होगा तो यहाँ से वो flaws जो होते हैं वो flaws crack में develop होंगे. Flaws will be developed into crack at initial impact. Okay, like this crack हो गया ऐसे and further impact और जोर से मार दिया आपने, so they will get broken down into different pieces. A smaller particle with additional mechanism of reduction when impact type of stress is applicable. ये force impact करेंगे तो ऐसा particle से separate होता है. Mechanism of size reduction when attrition is there. So attrition मतलब क्या? Attrition is a surface phenomenon. Suppose आपके पास एक particle है, you have this particle, you have to rub this particle on a surface. कोई एक आप stationary surface है, जैसे मान लीजिए मिट्टी का आपने पत्थर ले लिया और हाथ में ले लिया और आप उसको जो आपका दीवार है उसके ऊपर घिस रहे हो, तो अब इससे क्या होगा? पाउडर नीचे मिलेगा. So attrition is a surface phenomenon. It is a rubbing between stationary surface and particle, right? So उसके corners क्या होंगे? पहले corners जाएंगे. So unmilled particle upon attrition, so corners will be lost. ये देखो ये corners निकल जाएंगे smaller particle. So that is a edge break. So it is a mechanism for size reduction by attrition. तो कैसे होता है ये? Okay. Now why we are doing size reduction? For increasing the resolution rate, for uniformity of dosage, for stability, for that way, for resolution, for bioavailability. Now what is the disadvantages of size reduction? I'm not taking all the advantages, disadvantages, construction, working. That is the important part for your semester exam. वहाँ पे वो आपको क्वेश्चन आएगा. Describe the fluid energy mill, write down the construction, working and advantage, disadvantage. तो ये GPAT में वैसे नहीं आता. GPAT में important points जो है वो आते हैं. So what are the disadvantages of your size reduction? So during the size reduction is also known as a milling. इसको क्या बोलते हैं? Milling. So during the milling or during the size reduction in the different mills, so what will happen? Drug degradation may be there. ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है. क्यों हो सकता है ड्रग का डिग्रेडेशन? बिकॉज ऑफ द जनरेटेड हीट इन द मशीन. जो मिल्स होते हैं उसमें हीट जनरेट हो सकता है, उसमें डिग्रेडेशन हो सकता है. सो कूलिंग सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड ओवर देन. पुअर मिक्सिंग. आप बोलेंगे सर मिक्सिंग अच्छे होने के लिए तो आपको साइज रिडक्शन करें. यहाँ पे पुअर मिक्सिंग कैसे होगा? फिर पुअर मिक्सिंग व्हाई? डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज. जितना पार्टिकल साइज आप कम करोगे उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे उसके ऊपर बढ़ जाएंगे. सो एज देयर इज डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज,
there is an increase in the electrostatic force of attraction between the particles, and due to that there is a cohesive process, and due to cohesive process there might be agglomeration, there might be collection of particles. Okay, so poor mixing due to increased cohesive process. Electrostatic attraction process बढ़ जाते हैं, that is nothing but the cohesive process. Then contamination during the milling and grinding. Contamination कैसे होता है? Whatever milling you are using, जो भी मिल यूज कर रहे हो कैसे बना है, so it is made up of either metal, steel, iron, right? So during the milling, during the saturation, during the grinding, during the milling, so what happening, the material is being leached. जो iron का material है वो थोड़ा सा उसमें आ गया, that is a contamination. Disadvantage of saturation, there is a drug degradation, poor mixing, increased cohesive force, and contamination during the milling. Okay, factors affecting on the size reduction. Each and every factors will be described separately, but I am not taking them. तो यहाँ पे सिर्फ आपको factors मैं बोल देता हूँ. What are the different factors which affect the size reduction? These are nothing but the hardness, toughness, hardness of material. अगर material बहुत ही ज़्यादा hard है, so if your powder material is very hard, so it needs more force, it needs some more time for the size reduction. So toughness, material बहुत tough है the same thing. Abrasiveness, so if it is very abrasive, you can easily do size reduction. Stickiness, if material is sticky, then it will take time for size reduction. Material structure, moisture content, softening temperature, ratio of feed size to the product size. कितना मील पर्टिकुलर मील में आपने कितना फीड किया है, मतलब इनिशियल पाउडर कितना डाला है और आपको प्रोडक्ट साइज कितनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द साइज रिडक्शन, राइट? So hardness of material, toughness of material, abrasiveness of material, stickiness, material structure, moisture content, softening temperature, and ratio of feed to the product size, right? Now principle or mechanism of size reduction. Mechanism मतलब breaking कैसे होता है? What are the different mechanism of size reduction? Principle of size reduction or mechanism of size reduction or mode of size reduction. All these are the same terms, ठीक है? There are different mechanisms for size reduction. First one is nothing but the cutting. पहला mechanism क्या है? Cutting. So what is meant by cutting? Cutting of large sized particle into smaller particle using a sharp blades. तो जहाँ पे blade होगा, knives होंगे. So in between those knives, if there is a cutting of, जैसे बड़ा particle है, cut किया तो आधा बन गया. Cutting. Cutting means decrease the particle size of original material due to cutting between sharp blades. That is cutting. Now that is one mechanism. Again, comminution. Comminution is the second mechanism. Pressing of your pressing of your material between two rollers. ठीक है, दो रोलर है, उसके बीच में आप मटेरियल डालो उसको. So that is nothing but the comminution. Due to rubbing, due to pressing material between two big sized roller, that is a comminution. Then third mechanism is impact. So what is impact? So impact is nothing but the throwing of particular object to a stationary surface, or if any moving stationary surface is hammering to the your original material. तो यहाँ पे देखो फैन है, फैन घूम रहा है फैन, तो उसके बीच में अगर कुछ आपका हाथ आ गया तो इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, या फिर आपने कोई पत्थर ले लिया दीवार पे मार दिया तो वो इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो व्हाट इज इम्पैक्ट? हैमर्स आर यूज्ड टू ब्रेक द क्लम्स ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे बड़े बड़े आपके लम्स होंगे, एग्रीगेशन होंगे पाउडर का, so that is broken down by hammers known as a impact, right? Now what is attrition? So attrition means rubbing between two surface. तो दो surface है, उसके बीच में उसको घिस गया तो उसका साइज कम हो जाएगा. ठीक है, so rubbing between two surface and it is a surface feeling, right? Impact, cutting, attrition, comminution. Okay, so what are the different mechanism of size reduction? Mechanism of size reduction is nothing but the first one is a cutting, second one is a comminution, third one is a impact, fourth one is a attrition. Few instrument will have mechanism, only one mechanism, or they may have a combination of mechanism. For example, cutter mill works on the cutting principle, the roller mills work on the comminution principle, hammer mill will work on a impact, ball mill will work on a impact as well as attrition, fluid energy mill also act on a attrition as well as impact principle. So what is meant by impact? So impact occurs when moving particle strike against the stationary phase. जैसे ये गोला है,
मान लीजिए कि इट इज अ पाउडर का गोला है ये पाउडर का गोला, एक तो आपने ये स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मार दिया, यहाँ पे स्टेशनरी सरफेस ने इसको मार दिया, व्हाट विल हैपन, ब्रेकिंग ऑफ दिस powder ball. Okay, so example, right? So impact means moving particles will strike against the stationary phase, or some hammer will move on the particles. So example is nothing but the hammer mill and fluid analysis mill, which work on the principle of impact. Now attrition means what? So attrition means involves breaking down of material by rubbing action between two surfaces. दो surface के ऊपर rubbing action होगा. So as you can see, this one is again one surface, stationary surface. This one is again one stationary surface. ठीक है, एक आगे पीछे घूम रहे हैं. In between that there is a material. In between that there is a material. So due to rubbing action of these two surface, there is a decrease in the particle size. That is known as attrition. First one was the impact. Second one is the attrition. Third one is nothing but the cutting. Cutting means through a knives or through a sharp blades. ये दोनों के बीच में अगर मटेरियल आया तो उसको कट हो जाएगा, डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज. सो मटेरियल विल बी कट बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड एंड इट इज यूजफुल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइब्रस एंड वैक्सी सॉलिड्स. सो जितने भी आपके फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स होते हैं, so all they are okay. So all pharmacognostic drugs, they are size reduced by using cutter mill. Okay? So इसका example होगा cutter mill. Now compression means, or it is also known as combination compression. So in this mode the material is crushed between two rollers. Material क्या होता है, क्रश किया जाता है दो rollers के बीच में. तो एक रोलर है, एक रोलर है, इसके बीच में मटेरियल क्रश किया जाता है. So that is known as a combination or compression. Okay? So these are the mechanism of size reduction. So sometimes they used to ask. Now different mills, ये charts important. Now whatever is important, it has started. Different mills and size, product size obtained. कितने टाइप के मिल होते हैं डिफरेंट साइज रिडक्शन मिल में, कितने मिल से, और कौन सा मिल किसके लिए है, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मटेरियल के लिए यूज करते हैं और कौन से मटेरियल को नहीं यूज करते. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिंग मिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ polarizing mill, different type of size reduction mill, principal and particle size obtained and feed size, their uses and okay. So first is nothing but the name of mill, mechanism of size reduction. Third one is nothing but the particle size obtained and feed size. मतलब पार्टिकल कितने साइज का मिलेगा आपको साइज रिडक्शन होने के बाद में, और आपको कितने साइज का पार्टिकल उसमें डालना है, तो फीड साइज. राइट, नाउ दैट मटेरियल और दैट मिल इज यूज्ड फॉर व्हिच काइंड ऑफ मटेरियल and not used for which kind of material, right? Now first one is a cutter mill. So cutter mill, what is the mechanism? So cutter mill में mechanism होता है cutting. Cutter mill में mechanism cutting. Cutting is the mechanism in the cutter mill. Okay. So what is the particle size of 20 to 80 mesh? So you are going to get final product size 20 to 80 mesh. But आपको feed size मतलब initial original particle कितना डालना है? So you can use 0.5 to 1 centimeter डायमेंशन पार्टिकल फॉर द कटिंग. तो इतना साइज का पार्टिकल डालना है, उसका कटिंग होके आपको 20 to 80 मेश का पार्टिकल्स मिलेंगे. सो देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मटेरियल, दिस मिल, कटर मिल इज यूज्ड फॉर द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज ऑफ fibrous and crude drugs. So crude drugs और fibrous material और crude drugs. So जितने भी फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स है, so they are size reduced by cutting. So cutting mill or cutter mill is used for the size reduction of fibrous and crude drugs. For example, Raoulpia root, for example, leaves, stems, okay, tubers, etc., etc. But this cutter mill is not used for the friable material. Easily जो friable है उसको लिए use नहीं करते, because so it is not used for friable material. It is used for fibrous and crude drugs, right? So now second type of mill. Second type of mill is nothing but the roller mill. Second type of mill is nothing but the roller mill. So this mill is, what is the mechanism of size reduction? Compression or combination. यहाँ पे रोलर, दो रोलर के बीच में पाउडर को कंप्रेस किया जाएगा. That also known as a combination. Okay. Roller mill work on a compression principle. You are going to get a particle size of 20 to 200 mesh. Mesh मतलब क्या? mesh होता है ना आपका चाणी जो होता है उसमें 20 to 100 mesh का आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. व्हाट इज द फीड साइज? फीड साइज इज नथिंग बट द 0.5 to 1 सेंटीमीटर अगेन. तो सेम फीड साइज लाइक कटिंग. तो इतने साइज का मटेरियल आपको ये रोलर मिल में डालना है, आपको फाइनल पार्टिकल साइज इतना मिलेगा.
Now what is use of roller mill? So it is used for the soft material and not used for the abrasive material. जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए यूज करेंगे रोलर मिल, बट जो एब्रेसिव मटेरियल है उसके लिए यूज नहीं करेंगे, एब्रेसिव मटेरियल की यूज नहीं. सो दैट इज रोलर मिल. नाउ थर्ड वन इज नथिंग बट द हैमर मिल. तो हैमर मिल, so what is the principle of size reduction? Impact. Impact is the principle of size reduction, right? Now what is the particle size you are going to get? 40 to 325 mesh. What is the pit size? Again 0.5 to 0.5 to 0.01 centimeter. It is used for almost all kind of drugs, not used for abrasive material, not used for abrasive. Now fourth one is nothing but the ball mill. So यहाँ पे याद रखो ball mill will act on a will have a principle of attrition as well as impact. तो दो mechanism है इसका, attrition as well as impact. Now what is the particle size you are going to get? 20 to 200 mesh size, right? Now ball mill is used for brittle type of material or brittle drugs, not used for soft material. क्वेश्चन आ चुका है इसका. क्वेश्चन किसके ऊपर आ चुका है वो मैं एट द एंड बोलूंगा आपको ये कंप्लीट में. Fluid, next one is nothing but the fluid energy mill. Next mill is nothing but the fluid energy mill, right? So it works on the principle again attrition and impact. Attrition and impact याद रखो ये. Ball mill and fluid energy mill both works on attrition as well as impact. So what is the particle size you are going to get after fluid energy mill? 1 to 30 micron. So smallest particle size milling 1 to 30 micron, right? So it is used for moderately hard material and fiber material. What is the use of this fluid energy mill? Moderately hard and fiber material. Now not used for soft and sticky material. Okay? Now edge runner mill. Edge runner mill. So principle is nothing but the crushing and shearing. So you are going to get particle size in the range of 20 to 80 mesh. Pit size is 0.05 to 0.01 centimeter. It is used for all kind of drug, not used for soft and sticky material. End runner mill, same thing, like edge runner mill. Now colloidal mill, so there is a shearing. Shearing force is used to decrease the particle size. Mechanism क्या है? Shearing. Then particle size you will get in a range of 3 to 75 micron. All kind of drug can be milled, or it is used not used for dry milling. So this fluid colloidal mill is used mostly used for weight milling. ये ड्राई मिलिंग क्या होता है, वेट मिलिंग क्या होता है, मैं आपको बोलूँ. इस टेबल के ऊपर कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में. योर GPAT Niper DI Pharmacist. So first cutter mill is used for this fibrous material or crude drugs. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका. Now ball mill works on the principle of attrition and impact. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका. Fluid energy mill work on a principle of attrition and impact. क्वेश्चन आ चुका है. Again, smallest particle size can be obtained from one of the following mill. आपको क्वेश्चन आएगा smallest particle size can be obtained from one of the following communicating mill. So ऑप्शन में आएगा cutter mill, roller mill, ball mill, fluid energy. So remember smallest particle size can be obtained by fluid energy mill. This was again a question. So ball mill is not used for brittle drugs. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ये पुराना टाइप की क्वेश्चन होते हैं, अभी नए नए थोड़ा सा चेंज हो चुका है. Okay, I will explain. The colloidal mill is mostly used for weight grinding. Weight grinding मतलब use of solvent. Grinding के लिए solvent भी use करेंगे, जैसे water या फिर कोई भी. Colloidal mill is mostly used for suspension and emulsion. So decreasing the size of suspension and emulsion. So shearing is the mechanism. Cutting cutter mill में cutting mechanism है. Roller mill में क्या है? Compression है, ठीक है, या फिर combination है. Hammer mill में impact है. Ball mill में attrition as well as impact. Fluid energy में attrition as well as impact. Edge runner mill, end runner mill दोनों में crushing और shearing है. Particle size सब सेम है, ठीक है. Colloidal mill में shearing mechanism होता है and it is not used for dry milling. Okay? Now इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए वो भी बोला मैंने. और नेक्स्ट वन इज, तो कटर मिल होता क्या है? तो कटर मिल इज व्हाट? कटर मिल इज नथिंग बट द साइज रिडक्शन मिल इन व्हिच देयर इज अ कटिंग एलिमेंट्स. वहां पे क्या होगा? कटिंग. तो देयर विल बी ए लार्ज साइज केस इन, ये बड़ा सा मेटल का बॉक्स होगा, उसमें क्या होंगे? कुछ स्टेशनरी नाइव्स होंगे, कुछ रोटेटिंग नाइव्स होंगे. ओके. So size reduction is done by cutting or shearing the feed material with the help of rotating and stationary knives. The gap between rotating knives and stationary knives, or the gap between stationary and rotating knives, or opening between these, the opening of sieve will determine the size of particle. So normally rotor or rotating knives will rotate at 200 to 900 RPM. Now mortar and pestle, आपने देखा होगा mortar and pestle.
lab में. So it is used for the grinding. It is used for the decreasing the particle size. So grinding of material by attrition and pressure between two surfaces, that is mortar and pestle. Okay? Now roller mill क्या होता है? Roller mill उसका description ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं? Because sometimes they have to ask question on this description. So roller mill, so crushing of material between cylindrical rollers of stones or metal which are mounted on a horizontal shaft. That is a roller mill. तो roller mill, ये मिल का डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगा बाद में, डोंट वरी. हैमर मिल का प्रिंसिपल, हैमर मिल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? हैमर मतलब यहाँ पे हैमरिंग होगा. रैपिडली मूविंग हैमर्स दे आर माउंटेड ऑन द rotor. Rapidly moving hammers they are mounted on the rotor. Material which is to be reduced in a size. Material get reduced in the size because of the impact that rotates as 800 to 1500, 800 to 1000, okay, 8000 to 15,000 revolution per minute. Now next one is a ball mill. It is also known as pebble mill. Ball mill is also known as, remember, ball mill is also known as a pebble mill. क्या है? Pebble mill. PEBBLE, pebble mill. Or it is also known as tumbling mill, or also known as a revolving mill. Ball mill is also known as a pebble mill, also known as tumbling mill, also known as a revolving mill. Okay, question आता है synonyms. So rapidly moving balls causes impact and attrition of the powder. इसमें क्या होगा? एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर बड़ा वाला सिलेंडर, उसमें क्या होंगे? मेटल्स के बॉल, एक तो आयरन के होंगे या फिर ग्लास के होंगे या स्टील के. सो ड्यू टू movement of ball, impact will be there, and due to impact acceleration will be there. Okay, and if the speed of ball mill is this, or if the speed of ball mill is a slow, at that time some attrition will also be there. Therefore ball mill work on a principle of impact as well as attrition. Now next mill is nothing but the fluid energy mill. तो फ्लूइड एनर्जी मिल को क्या बोलते हैं? देखो बॉस, फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नोन एज जेट मिल और माइक्रोनाइजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर. तो ये सिनोनिम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. सो बॉल मिल इज आल्सो नोन एज अ पेबल मिल और टम्बलिंग मिल और रिवॉल्विंग मिल. सो लाइकवाइज फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नोन एज अ जेट मिल और माइक्रोनाइजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर. सो फीड पाउडर स्टॉक इज अ सस्पेंडेड. भाई फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब एयर, फ्लूइड मतलब एयर प्लस सॉलिड. फ्लूइड किसको बोलेंगे? एक तो लिक्विड प्लस एयर जो होता है उसको भी फ्लूइड बोलते हैं, या फिर एयर प्लस सॉलिड उसको बोलते हैं फ्लूइड. एयर प्लस सॉलिड, सॉलिड मतलब पार्टिकल्स एंड एयर. सो एयर स्ट्रीम इज यूज्ड. पार्टिकल are suspended in the air stream and air stream is allowed, so which will take particle and there is the impact of these particles on the surface of mill, impact, and in between particle attrition will also be there. So again impact and attrition both are the mechanism. Feed powder stock is suspended in the high velocity air stream which causes impact and attrition. Venturi feeder is used for feeding. Cyclone separator is used and bag separators are used for the separation of particles. Right? Now next one is a colloidal mill. colloidal mill जो है उसके ऊपर GPAT 2020 में क्वेश्चन आ चुका है. तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, पेबल मिल. Now next one is a colloidal mill. What is the description? Colloidal mill will look like a exactly like a, मराठी में उसको बोलते हैं जातं. जातं जे असतं तसं ते. So one rotating question was like that. पहले इसका देख लेते. One rotating steel and one rotating disc. One rotating steel or one rotating disc. One rotating steel and one stationary steel disc. तो यहाँ पे क्या है? वन रोटेटिंग स्टील डिस्क है. यहाँ पे एक वन स्टेशनरी मतलब एक घूमने वाला ऑब्जेक्ट है और एक स्टील मतलब एक रोटेटिंग स्टील मतलब एक रोटेट होने वाला स्टील का डिस्क है, उसको बोलते हैं रोटर. रोटेटिंग स्टील डिस्क रोटर. And stationary steel disc is known as stator. Stationary steel disc stator. So one rotor, one stator, and there is a small clearance or orifice between this rotor and stator. कितना clearance है, कितना orifice है? 0.05 to 0.075 nanometer millimeter. So there is a one rotating disc, there is a one stationary disc, and in between these two discs there is a one small opening or orifice of 0.05 to 0.75 millimeter. The size reduction is due to the grinding. Now उन्होंने ऐसे ही पूछा था क्वेश्चन. there is a one stationary steel disc, there is a one rotating steel disc, and in between these two discs there is a
opening of 0.05 to 0.75 mm. This is a perfect description for following mill. तो उसमें ऑप्शन में आया था बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, कोलेडल मिल एंड हैमर मिल. Answer was a colloidal mill. I will explain this again. Now edge runner mill and end runner mill. So यहाँ पे क्या है कि two rollers, they are two rollers of stone or steel or granite having weight in a tons. They are mounted horizontally on the shaft known as edge runner mill. End runner mill मतलब heavy weight steel pedal dumbbell shaped moves in a mortar. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So these are the mills. उसके वेरिएंट क्या है? So different variant of mills. वेरिएंट ऑफ मिल मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई करके नया मशीन बना है. So वेरिएंट ऑफ मिल्स क्वेश्चन आ चुका है. So कटर मिल विल बी, कटर मिल का वेरिएंट है सिंगल रनर डिस्क मिल, डबल रनर डिस्क मिल. So कटर मिल हैज two variant. First one is known as single runner disc mill and second one is known as a double runner disc mill. Variant आपको याद रखना है. Now second mill is roller mill. So roller mill has a variant known as a multiple smooth roller or corrugated roller or swathhook roller. ठीक है. हैमर मिल का वेरिएंट कौन होता है? फिशपैट्रिक मिल. हैमर मिल का वेरिएंट होता है फिशपैट्रिक कम्युनिटी मशीन और फीड्स मिल. And remember it is also used for the saturation of your herbal drugs. जो roots वगैरह होते हैं उसके लिए यूज करते हैं. Hammer mill has a variant known as a Fitzpatrick comminuting mill or feeds mill and stock tornado mill. याद रखना है आपको इसको. ठीक है नाम. Now next one is a ball mill. Ball mill has a variant known as a Hardinge mill. इसके ऊपर GPAT 2019 में क्वेश्चन है. So Hardinge mill is a variant of, question was like that. Hardinge mill is a variant of following. और ऑप्शन में था बॉल मिल, हैमर मिल, कटर मिल वगैरह, फ्लूइड एनर्जी मिल. So remember Hardinge mill is a variant of ball mill. Now continuous ball mill, vibrating ball mill. So these are the another variant. Vibrating ball mill में क्या है? नॉर्मल बॉल मिल में आपका रिवोल्यूशन होता है, आपका जो सिलेंडर है वो घूमता है. बट वाइब्रेटिंग बॉल मिल में क्या है? वाइब्रेटिंग बॉल मिल. सो हियर इज अ यूज ऑफ मैग्नेट यूज करते हैं फॉर वाइब्रेशन ऑफ बॉल. सो वाइब्रेटिंग दैट इज अ वाइब्रेटिंग बॉल मिल. नाउ वेरिएंट ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल. व्हाट इज द वेरिएंट? सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्ट पोलराइजर. दैट इज अ वेरिएंट ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल. ठीक है. तो वेरिएंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. ये पहले जीपैट में पहले क्या पूछते थे? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बॉल मिल? एट्रिशन, second option impact, third option attrition impact both and fourth option combination. तो ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे. आजकल अभी वो इजी लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ठीक है. वो पूछते हैं व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ कटर मिल. सॉरी सिंगल रनर डिस्क मिल, डबल रनर डिस्क मिल. वेरिएंट ऑफ रोलर मिल, मल्टीपल स्मूथ रोलर, करोगेटेड रोलर और स्वैथोक रोलर. मतलब एक स्मूथ रोलर है जिसके ऊपर कोई ये नहीं, एक अदर रोलर होगा उसके ऊपर थोड़ा सा खरदुरा होगा. मतलब हैमर मिल उसका वेरिएंट है फिशपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन और फीड्स मिल और स्टोक टॉर्नेडो मिल. बॉल मिल का वेरिएंट कौन है? हैंड्रिंज मिल, कंटिन्यूअस बॉल मिल, वाइब्रेटिंग बॉल मिल. फ्लूइड एनर्जी का कौन है? फ्लूइड एनर्जी मिल का सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्ट पोलराइजर. सो दिस इज द वेरिएंट ऑफ डिफरेंट मिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखो कटर मिल कैसे होता है. सो देयर इज वन केसिंग. ये कटर मिल का डिस्क्रिप्शन. देयर इज वन केसिंग. इन दैट यू हैव रोटर के ऊपर क्या है? नाइव्स लगे. This is knives. So this is known as a rotating knives. This is known as a stationary knives. Okay. So in between that, so your product is faded over there, and there is a size reduction. This below this mill there is a screen or there is a mesh. So you are going to get a desired particle size. So that is a description for cutter mill. So the more description पढ़ना है तो आप तो लोगों में that is useless. Now this is a fluid. This is a colloidal mill. This one is known as a colloidal mill. ये क्या है? कोलेडल मिल. दिस वन इज अ कोलेडल मिल. और सो ये दिस इज नोन एज अ स्टैटर. दिस इज नोन एज अ स्टैटर. ये जो है ये स्टैटर वाला पार्ट है, ये रोटेट नहीं होता. स्टैटर ये फिक्स्ड स्टील स्टेशनरी स्टील डिस्क. देन दिस रोटर इज नोन एज अ मूविंग स्टील डिस्क. दिस वन इज अ रोटर एंड इन बिटवीन दैट स्टैटर एंड रोटर देयर इज अ स्मॉल ओरिफिस. देयर इज अ स्मॉल क्लियरेंस. कहाँ पे? ये फीड इज there and due to rotation or due to grinding between stationary and rotating element rotor and starter, there is a grinding and there is a side direction. So this is a description of colloidal mill. Colloidal mill can be covered. ये पूरा के पूरा मिल जो है एक
एक आइसोलेट किया जा सकता है, पूरा का पूरा मिल जो है कवर किया जा सकता है. So that's why colloidal milk can be used for the sterile manufacture. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका. So colloidal milk can be isolated and that's why the milk can be used for sterile. Now next one is nothing but the hammer mill. Hammer mill कैसा होता है? So whatever product or whatever particles you want to do size reduction, they are present in the hopper. So they will move in the main. So in that mill there is a one rotor. On the rotor there is a hammers are fixed. ये क्या है? Hammers है. These are the hammers. So hammers are fixed and this rotor is moved rotated at a speed. ये speed से घूमता है. जब भी particles जो भी powder है यहाँ पे आएगा बड़े बड़े particles, इसको ये impact होगा उसका. Hammer will cause impact to one particle and there is a decrease in the particle size. So you will get a product. Hammer mill. Now next mill is nothing but the, you will see it is nothing but the roller mill. It is nothing but the roller mill. Size reduction is because of the crushing between these two roller mill. These two rollers, ये stone के roller होंगे या फिर granite के होंगे या फिर steel के होंगे. So crushing of material between these two roller causes the size reduction. And roller mill is mostly used for the size reduction of your suspension. Sorry, size reduction of your creams and ointments. Roller mill is used for the decrease in the particle size in the creams and ointments. Now next one is nothing but the ball mill. So as you can see, this is a diagram of ball mill. तो ये एक cylinder होगा. This one is known as cylinder. This cylinder is fixed up on the moving element. ठीक है, ये घूम सकता है, ऐसा arrangement होता है. And in that you have balls. These balls are made of either steel or iron or they may be of either glass. When this cylinder will move, ये घूमेगा जब, ठीक है, horizontally. So these balls will also will rotate at a particular speed. These ball will rotate. Now in between that you have to feed. एक ही बार में आपका जो मटेरियल है वो फीड करना है आपको बॉल में, ठीक है. Now you have to start this machine. What will happen? Due to rotation of this cylinder, ये cylinder आपको घूमेगा ऐसा, likewise ये ऐसा घूमेगा. Due to the movement, what will happen? So if you keep the speed of ball mill very low, लो स्पीड हो गया तो ये क्या हो गए, जो बॉल्स है वो एक में के ऊपर ही ग्लाइड हो जाएंगे. इन दैट कंडीशन साइज रिडक्शन विल नॉट बी. अगर बहुत ज्यादा स्पीड रख दिया बॉल मिल का, इफ यू हैव वेरी लेस स्पीड, तो बॉल विल ग्लाइड ऑन ईच अदर एंड देयर विल बी नो साइज रिडक्शन. इफ यू increase the speed, if you have high speed of ball mill, what will happen? Balls will revolve on the balls will revolve. Okay, balls will revolve and take a circular path, and powder will remain in between the balls. So again, there will be no size reduction. Ball will move centrifugally, and particles of powder will move in the center. There will be no size reduction. यहाँ पे भी no size reduction, यहाँ पे भी size reduction नहीं होगा. So this is known as the optimum speed of ball mill. Ball mill का speed क्या करना पड़ेगा आपको? Optimum. What is optimum? You have to adjust the speed of ball mill in such a way that if balls go at the top, then it will drop on their particular height on a powder. ये बॉल ऊपर गया, नीचे गिर गया, बीच में गया पाउडर, पाउडर के ऊपर इम्पैक्ट होगा एंड साइज रिडक्शन होगा. सो यू हैव टू ऑपरेट बॉल मिल एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम स्पीड. ओके, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ बॉल मिल, देन ओनली साइज रिडक्शन विल बी. सो एट लेस स्पीड नो साइज रिडक्शन, एट अ हायर स्पीड नो साइज रिडक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज अ फ्लूइड एनर्जी मिल. उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. दिस वन इज नोन एज अ फ्लूइड एनर्जी मिल. सो व्हाटएवर मटेरियल इज देयर, सो यू हैव टू फीड थ्रू फीडर. तो यहाँ से मटेरियल आपको सैचुरेशन के लिए डालना है. दिस इंजेक्शन इज फॉर एयर. यहाँ से आपको एयर पास करना है. तो एयर विल टेक योर मटेरियल अलॉन्ग विद मटेरियल प्लस एयर, सो दैट विल बी सस्पेंडेड इन द मिल. यहाँ पे क्या है? एयर सस्पेंडेड पार्टिकल, दैट इज नोन एज अ फ्लूइड. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फ्लूइड एनर्जी. यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम से हाई प्रेशर से अंदर जाएंगे तो इसके ऊपर टकराएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ impact. Okay, impact, and in between the particle there is attrition. So attrition and impact is the mechanism of fluid energy mill as well as ball mill. You will get smallest particle size in the fluid energy. Special points from this chapter again. So micropulverizer is used for sugar, chemical and pharmaceutical as well as cosmetic industry. Micropulverizer. Hammer mill. Okay, hammer pressure and vertical impact pulverizer. Hammer pressure
and vertical impact pyrolyzer work on the principle of impact. हैमर क्रशर जो है वो impact के principle के ऊपर act करता है. Vertical impact pyrolyzer will also act on the same principle. Colloidal mill can be used for sterile product because it can be isolated. and इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Colloidal mill can be used for sterile product. Okay. Then fluid energy mill is also known as jet mill or micronizer or ultra fine grinder. तो इसका सिनोनिम से ऑलरेडी देखा है. Fluid energy mill is also known as jet mill or micronizer or ultra fine grinder. Next one is nothing but the colloidal mill can be used for preparing the colloidal dispersion, suspension, emulsion and ointments. Colloidal mill can be used for preparation of colloidal suspension, dispersion, emulsion and ointment. नॉर्मली क्या होता है कि 10 फोल्ड डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज. अगर पार्टिकल साइज उसका 10 टाइम्स कम हो गया so there is a increase in the 10 fold surface area. 10 fold decrease in the particle size will result in the 10 fold increase in the surface area. ठीक है, मतलब 10 बार 10 टाइम्स पार्टिकल साइज कम होगा 10 टाइम्स सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा. 10 fold decrease in the particle size will increase the 10 fold surface area is inversely proportional to the particle size. तो पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना डिसोल्यूशन बढ़ेगा, उतना बायो अवेलेबिलिटी. पार्टिकल साइज जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस एरिया कम रहेगा एंड अवेलेबिलिटी भी कम रहेगा. सो पार्टिकल सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नाउ क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल. तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल. ठीक है, सो क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल इज नथिंग बट द एनसी. एनसी मतलब क्या, नॉन क्रिमिलियर. एनसी मतलब क्या, नॉन क्रिमिलियर. नॉन क्रिमिलियर नहीं होता है. एनसी मतलब क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल. इट इज एनसी क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल. इट इज नथिंग बट द 76.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी. फॉर्मूला लिख लो 76.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी. ये क्वेश्चन आ चुका है. सो व्हाट इज डी. डी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बॉल मिल. सो क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल. बॉल मिल का स्पीड कितना रखना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज दिस 76.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी. व्हाट इज डी, डायमीटर ऑफ बॉल. So it will give you optimum speed of ball mill. Then ball mill is operated from the 60 to 80% of the critical speed. Ball mill are operated from the 60 to 85% of critical speed. अगर मान लीजिए critical speed है ball mill का 100 rpm, तो उसका 60 मतलब 60 rpm से लेके 85 rpm तक आप उसको speed रख सकते हैं. That is a ball mill. Ball mill are operated at a from 60 to 85 of the critical speed. Optimum, okay, so optimum speed of ball mill. Critical speed of ball mill देखा है आपने. critical speed of ball mill मतलब है, critical speed of ball mill मतलब क्या है. So this is the speed of ball mill above which there will be no size reduction. इसके स्पीड के नीचे ही आपका रहना चाहिए, इसके ऊपर गया तो size reduction नहीं होगा. Critical speed of ball mill is given by this formula. NC is equal to 76.6 divided by square root of D, right? Now ball mill will operated at a 60 to 85% of the critical speed. Now next one is nothing but the optimum speed of ball mill. तो आपके efficiently size reduction करने के लिए कितना स्पीड रखना चाहिए बॉल मिल, known as optimum speed. Optimum speed of ball mill is equal to N is equal to 57-40 57 minus 40 log of D. What is log of D? मतलब ये डैश मतलब ये 2 है, 57 to 40 log of D. So what is N? N is nothing but the number of revolution per minute. D is nothing but the inside diameter of ball mill. Now, if a ball mill is having particular dimension, ये एक ball mill है आपके पास, उसका size कितना है 226.6 सेंटीमीटर. एक ball mill है आपके पास, उसका ball mill of 228.6 सेंटीमीटर का आपके पास ball mill है inside. एंड उसका 11.4 सेंटीमीटर जा रहे हैं. ओके, 11.4 सेंटीमीटर जा रहे हैं. सो ए बॉल मिल ऑफ 228.6 सेंटीमीटर बॉल मिल विथ हैविंग जार डायमेंशन 11.4 सेंटीमीटर विल हैव ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कितना 28 to 125 आरपीएम रिस्पेक्टिवली. इसके ऊपर एज इट इज एक बार क्वेश्चन आ चुका है. ए बॉल मिल ऑफ 228.6 सेंटीमीटर हैविंग ball mill of 228.6 centimeter having 11.4 jar ball. What will be the optimum speed of ball mill? इसके लिए कुछ कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी बुक में दिया था. This is 28 to 125 rpm. So if you operate a ball mill with a very less speed, these balls will glide on each other and there will be no size reduction. Less speed.
operate a ball mill with a high speed, what will happen? These balls will revolve centrifugally, okay, and particles will be in between this. So no size reduction. So you have to operate a ball mill with the optimum speed. ये होगा optimum speed. So what is speed? Optimum speed. Ball should move at a particular height, and then ball should drop from that height on a particle bed, so that there will be impact. तो particle कब टूटेगा? जब उसके ऊपर बॉल गिरेगा. कम स्पीड होगा तो बॉल एक में के ऊपर ही गिरेगा, पार्टिकल को अलग दे देगा. ज़्यादा स्पीड किया तो बॉल सेंट्रिपेटली घूमेगा, पार्टिकल से आ रहेगा. नो साइज रिडक्शन. So you should have to use optimum speed of ball mill for size reduction. Triple roller mill and colloidal mill can be used for grinding, preparation of dispersion, suspension, emulsion and ointment. तो roller mill particularly ointment के लिए यूज किया जाता है. Colloidal mill is particularly useful for the dispersion, suspension, emulsion. Okay, in the wet grinding, surfactants are added. Okay, so dry grind. There are two type of grinding. First one is known as a dry grinding, and first second one is known as a wet grinding. ड्राई ग्राइंडिंग मतलब क्या? ड्राई ग्राइंडिंग मतलब जो आपका पाउडर है एज इट इज यूज करना है उसको साइज रिडक्शन के लिए. वेट ग्राइंडिंग मतलब क्या? सॉल्वेंट यू हैव टू यूज along with the surfactant. So in case of wet grinding, surfactant are added to a powder to attain a particle size in range of. अगर कम ही पार्टिकल साइज बहुत कम चाहिए तो उसमें क्या करो? सर्फेक्टेंट ऐड कर दो, सॉल्वेंट ऐड कर दो, ग्राइंड करो उसको. वेट ग्राइंडिंग, राइट. नाउ थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन. क्वेश्चन आ सकता है आपको. फॉलोइंग. Okay, which theory is related with the size reduction? First theory is nothing but the Griffith theory. Griffith theory. So what is the theory tells? The amount of force to be applied depends on the crack length and force of stress at an atomic bond. Two bond of the crack apex. मतलब क्या है? एक पार्टिकल है आपके पास. ग्रिफिथ के अकॉर्डिंगली पार्टिकल ब्रेक कब होगा? So the amount of force to be applied for the breaking of that particle depends on the crack length. पहले जो क्रैक लेंथ कितना है उसके ऊपर एंड फोर्स ऑफ स्ट्रेस एट एटॉमिक बॉन्ड, दैट इज थ्योरी. सो द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द क्रैक लेंथ एंड फोर्स ऑफ स्ट्रेस एट एटॉमिक बॉन्ड ऑफ द क्रैक अपेक्स, दैट इज द ग्रिफिथ थ्योरी. आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है बस. ग्रिफिथ थ्योरी इज रिलेटेड विद द साइज रिलेशन. एज पर दिस T is equal to square root of y and epsilon divided by c. T क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है इन मिली पास्कल. Y क्या है? यंग्स मॉडुलस इन मिली पास्कल. E क्या है? सरफेस एनर्जी ऑफ द वॉल क्रैक, ओके, जूल्स पर मीटर क्यूब. C क्या है? क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल पाथ रिक्वायर्ड फॉर द. तो आपको इतना सारा नहीं, आपको सिर्फ इतना ग्रिफिथ थ्योरी इज रिलेटेड विद द साइज रिडक्शन. बस. सेकंड थ्योरी. ओके, सेकंड, this is the theory. Now laws related with the energy of combination, that is a Rettigner's theory. Carl von Rettigner in 1867 stated that energy necessary for the size reduction is directly proportional to the increase in the surface area. इसके Rettigner's के accordingly क्या है कि energy required for the size reduction is directly proportional to the increase in the surface area. जितना ज़्यादा surface area होगा पार्टिकल का उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ऐसा ये मार्शल का मानना है. कौन है ये? रेटिग्नर्स. ठीक है. तो ग्रिफिथ थ्योरी है एक, रेटिग्नर्स थ्योरी है. दो थ्योरी आ गए आपको सामने. और थर्ड थ्योरी किक्स थ्योरी. ठीक है, किक्स थ्योरी इज आल्सो करते हैं. फोर्थ थ्योरी. ओके, रेटिग्नर्स थ्योरी तो हो गया. फोर्थ थ्योरी आपका बॉन्ड थ्योरी. लास्ट वन है आपका बॉन्ड थ्योरी. सो एनर्जी यूज्ड टू क्रैक द प्रोपगेशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक इंट्रोड्यूस. ये छोड़ो, ये आपको समझ में नहीं आएगा. समझने के लिए आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा. बस आपको इतना याद रखना है कि थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन कितनी थियरी है. थियरीज रिलेटेड टू साइज रिडक्शन. फर्स्ट वन इज अ ग्रिफिथ थ्योरी, देन सेकंड वन इज अ रेटिग्नर्स थ्योरी, थर्ड वन इज अ किक्स थ्योरी, फोर्थ वन इज अ बॉन्ड थ्योरी. दीज आर द फोर थियरीज. अगर पूछा है कि लॉज रिलेटेड टू साइज रिडक्शन, लॉज पूछा है तो फिर तीन ही आएगा. लॉ कितना आएगा? तीन. पहला आएगा रेटिग्नर्स थ्योरी, दूसरा आएगा किक्स थ्योरी एंड तीसरा आएगा बॉन्ड थ्योरी. अगर थ्योरी पूछा है तो चार ही है. थ्योरी पूछा है तो ये चारों नाम आ जाएंगे. ग्रिफिथ थ्योरी, रेटिग्नर्स थ्योरी, किक्स थ्योरी एंड बॉन्ड थ्योरी. अगर लॉ पूछा है तो रेटिग्नर्स थ्योरी, किक्स थ्योरी एंड बॉन्ड थ्योरी. थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल इन द साइज रिडक्शन, ये बेसिक होता है. मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड. मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड बिहेव कैसे करेगा? जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे. ओके,
सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द सॉलिड, ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेस इंक्रीज किया, स्ट्रेस मतलब फोर्स, फोर्स और स्ट्रेस on y axis and strain on x axis. Okay. Now mechanical behavior of solid. Upon the application of stress, particle gets strained. Linear proportion is defined by Occlula. तो आपने अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा दिया, कुछ टाइम तक फोर्स लगाए, कुछ नहीं हुआ, और आपने छोड़ दिया फोर्स, तो पार्टिकल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल। मतलब अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस पार्टिकल विल एक्ट एज इलास्टिक। तो जितना रबर को आप खींचते हो कुछ टाइम के लिए और छोड़ देते हो, फिर से वापस वही जोड़, बट लेकिन आपने रबर को इतना खींच लिया कि डायरेक्टली टूट गया। तो मतलब कुछ 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 अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा जहाँ पे रबर टूटेगा नहीं, सिर्फ स्ट्रेच होगा, और फिर वो फोर्स में गया तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। So particle also behaves like same in the similar way. So if you apply a stress or force on our particles, so it will get strained, and if you remove the force, it will regain them. So at the initial point, particles will behave like elastic. Okay, stress is proportional to the strain, and slope of linear portion is known as a Young modulus. ये जो linear portion रहता है उसको बोलते हैं Young modulus. This linear portion is Young modulus. मतलब up to Young modulus your particle is not going to break. इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, पार्टिकल स्ट्रेन हो गया, लेकिन फोर्स रिमूव किया तो पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। सो एट दिस पॉइंट your particle will not break when this Young modulus or yield value is passed, and if you apply force which is more than force required to pass this yield value, that after that plastic deformation will occur and there is a breaking of particle. And you can see mechanical behavior of solid. So upon application of stress to the particle, particle get strained in a linear portion which is defined by Ohm's law. Stress is proportional to the strain. Slope of linear portion is known as a Young modulus, and it expresses the stiffness or softness of particle or elastic nature of particle in the megapascal. If force of impact does not exceed the elastic limit, अगर फोर्स जो है, स्ट्रेस जो है, इलास्टिक लिमिट के ऊपर नहीं है, ओके, दैट इज मींस रीजन ऑफ हुक्स लॉ, द मटेरियल इज रिवर्सिबली डिफॉर्म्ड। मतलब वो फिर से वो ओरिजिनल साइज पे, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पे आएगा। बट व्हेन force applied is more than elastic limit, what will happen? The stress strain curve become non-linear at a yield point and measure for resistance of permanent deformation. So beyond the yield point, region represents irreversible plastic deformation. Yield point के बाद में आपका particle break होगा. Area under curve, the curve in this area under curve, the fracture toughness or model of toughness fracture particle can be obtained when force exceeds the elastic limit. सिंपल ये यहाँ पे सिर्फ लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं ये बोल देता हूँ और एक बार। तो मान लीजिए आपने एक पार्टिकल को ब्रेक करना है, पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स अपने एक वाई एक्सिस पे पार्टिकल का बिहेव ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पार्टिकल के लिए ब्रेक करने के लिए फोर्स अप्लाई करना है, मींस स्ट्रेस, यू आर अप्लाइंग स्ट्रेस टू ब्रेक द पार्टिकल। सो पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ इलास्टिक एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, कुछ अमाउंट का फोर्स जब अप्लाई करेंगे पार्टिकल विल डिफॉर्म, बट व्हेन यू विल रिमूव द फोर्स इट विल रिगेन द ओरिजिनल शेप, मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, बट अप ओके अप टू this point is known as a linear portion, is known as a Hooke's law, and after the yield point इसके okay, if you apply the force which is more than the force up to the yield point, आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, what will happen? Okay, then only particle will break. This was regarding the size reduction. इसमें कोई किसी को डाउट है तो